हेलो मित्रों, कैसे सब? फाइव पॉइंट 45। हेलो। हाँ बोलो। आ गया भाई मैं। भाई यार वो ढूंढनी पड़ेगी यार, वो है क्या नाम है उसका, ईशा मलिक नहीं है? हाँ वो है। कोटा। हाँ मैनिफेस्टो हो गया भाई। मेरा नाम डाला ही नहीं। हाँ बात करते हैं थोड़ा। हाँ यार गाड़ी नहीं। अगर नहीं मिलेगी ना हुआ वाला फाड़ दूंगी। क्या हो गया भाई? गेट लॉक कर दिया है भाई। बी
गाड़ी तेज रहे, ऊपर तो घने रहे, वो घनी गाड़ी हो जाएगी अगर तो जाता है। तो जा रहा फिर से। So November 6th को me, my friend कहाँ है? were chilling in front of Legion Bank and वहाँ पे भाई JB आ and जाएगा। Ron Austin टिकट्स बेचने आते हैं। जो एक कॉन्सर्ट हुआ था, सिंगिंग कॉन्सर्ट हुआ था रिसेंटली। तो भाई ये हम लोग गेट भी टिकट्स खुल वगैरह रहा है। परचेस कर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से पैसे कलेक्ट किए, JB को मैंने पेमेंट की और रॉन ने मेरे को टिकट $20 वो मुझे दिया। अगर 4 रूम I went to डायमंड पास सो दैट हम लोग सेंट्रल एयरपोर्ट में आ गए। और उतने में ये होता है कि कुलचा सिंह जो सिग्नल है बीन मशीन का, वहाँ से मेरे पास गाड़ आते तो हैं। नहीं है। मुझे कहते कि देखो 2 मिनट यहाँ पे रहो, मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरे को मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था कि भाई वो उनके आपसे तब आ 2 मिनट जा रहे में हम करेगा गए। कि नहीं। तो मैं चले जाता हूँ उनसे बात करने के लिए। तो लीजियन बैंक से होता है सिग्नल तक। दस से कहता हूँ, 10 के साथ होता तो है ना। कौन है? भाई Because कौन सा है, कौन सी मुझे तरफ अच्छे आना से है, पता है कि बता मैं दो। इसको संभाल लूँगा। तो ये लोग भी साइड हो जाते हैं बिकॉज उनको ऐसा चाहिए था कि यार गलती से कुछ टच वच ना हो जाए जिससे मुझे हार्म हो जाए। तो वे वो मुझे किडनैप करके लेके जाते हैं। किडनैपिंग के दौरान मुझे कहते हैं कि अपना फ़ोन और अपना रेडियो दोनों क्लब बॉक्स में डाल दो। तो मैं वो चीज़ें करता हूँ। बट वो ये उनको ये नहीं पता होता कि मेरे पास एक और फ़ोन है जो मेरे जेब में था। आई वॉज हैविंग वन H24 एंड वन आईफोन। तो मैं आईफोन और रेडियो को आपस में डाल देता हूँ ए एंड आई ट्राई भाई डूइंग 911 धीरे से। बट पीडी का रिसीवर शायद ख़राब होता है तो 911 होता नहीं है। मीनवाइल वो मुझे एक बड़ी अजीब सी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था और थोड़ा ओशन था एंड देन पहाड़ थे हल्के से। तो वहाँ पे मुझे हैंड्स ऑफ वगैरह करवा के मेरे कपड़े वगैरह उतरवा देते हैं, नाइफ रख के। और मुझे कहते हैं कि लैप डांस करो। और कुलचा सिंह आवाज अपने नहीं आ फ़ोन से रहा रिकॉर्ड भाई, करते रहते हैं कॉल मेरे कर को। मेरे को। और उतने में मेरा दोस्त उसे भाई मैं वीडियो कह कॉल रहा कर हूँ लेता है ये कौन से जस्ट रूम टू में आना है भाई। टेक एडवांटेज की इनकेस अगर वो वीडियो कॉल उठा लेते तो लॉबी मुझे में आ पता जाओ एक चलता बार, कि लॉबी कुलचा में। सिंह कहाँ पर है। तो वो वीडियो कॉल उठा लेता है कुलचा सिंह और उसको मालूम पड़ जाता है कि ये लोग इतने इतने एरिया में अबे क्या कर यार रहे हैं। माइक बंद कर रहा था मैं, और करो तब तक ये लोग करो। मुझे डांस करवाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि तूने हमें भाई लॉबी शाम के में बीच हूँ। में लात मार दिया, लड़कियां हमें ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है लेफ्ट साइड है। और बॉक्सिंग फाइट नहीं करनी चाहिए थी, गेट नहीं ये खुल वो। रहा उसका। मैं समझ जाता हूँ कि ये एक ग्रज है चलो करो। जो कि मैं इतने टाइम से फ्रेंडली समझ के चल रहा था बिकॉज मैं हॉस्पिटल भी गया था उनसे बात करने। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इन्होंने एक ग्रज होल्ड किया मेरे अगेंस्ट में, इसलिए मुझे उठा लिया। मैं यही मेन रीज़न है उठाने का, मुझे किडनैप करने का। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उतने में भाई वो अब सब पता रिकॉर्ड नहीं ये रिकॉर्ड कर चीज लेते खड़ी। हैं। मुझे कहते हैं कि चलो ठीक है गाना वाना गाओ। मैं गाना वाना गा देता हूँ, डांस वांस कर देता हूँ। फिर वो मुझे मेरा फ़ोन वगैरह वापस करते हैं और अपनी कारा में बैठते हैं रेंटल एंड वो वहाँ से निकलते हैं। और थोड़ी देर में मेरे दोस्त लोग मुझे पिक करने आते हैं फिर। आओ भाई अंदर आओ। ओके, तो डेक्स्टर जी आपको ये सारे जो इवेंट्स थे ये क्या लगते हैं कि ये इन्होंने प्रॉपरली मुझे प्लान कौन करके बात नहीं कर सकते ना आगे प्रीमेडिटेटेड जाके, तरीके समझ से रहे हो? किया था, ये ऑन द विस्पर करके स्पर बोलो। ऑफ द मोमेंट काइंड ऑफ एक्शन था कि बस चीज़ें अनफोल्ड होती गई जरा ये छोटा सब। कर लेना। सो इट वॉज प्री प्लान्ड जैसा मुझे लगता है बिकॉज अगर ये स्पर ऑफ द मोमेंट होता तो हम लोग शायद चिल कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते या फिर सडनली वो मेरे पे आते या कुछ बोलते हाँ चलो चलो तो मैं जाता ऐसा कुछ। बट इट वॉज लाइक प्री प्लान बिकॉज हम लोग अलग जगह पे थे, वो लोग अलग जगह। एंड देन कुलचा मेरे पास आता है, मुझे एक साइड में लेके जाता है। मैं देखता हूँ वैसे वहाँ पे कारा कारा खड़ी है बट आई वॉज लाइक कि ठीक है किसी और की होगी। देन वो घूम के मेरे पास आते एकदम से, वो सब 4 लोग निकलते हैं, 3 लोग निकलते हैं उसमें से एंड देन चाकू वाकू निकाल के मेरे पास आ जाते हैं। तो इट वाज लाइक कि मे बी ऐसा था कि शायद कुलचा को वो बेचे कि भाई ठीक है, बिकॉज मैं कुलचा से ही बात करने गया था बिकॉज मेरी और उसकी बॉक्सिंग फाइट थी। तो मैं उनसे ही बात करने गया था, उनका हाल चाल पूछने गया था हॉस्पिटल में। तो वो उसी को बेचते शायद एंड देन मैं उनके साथ ही सिग्नल तक जाता हूँ और फिर मुझे वो किडनैप कर लेते हैं। आई डोंट ऑलराइट थिंक सो इट सर। वाज फॉर ऑफ अ मोमेंट, इट वाज प्री प्लान। एंड क्या आपको अब सेफ लगता है इस सिटी में घूमते हुए ये जानते हुए कि ये लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट अब तो नहीं बिकॉज उसके जस्ट नेक्स्ट डे मुझे स्टैप भी कर दिए थे। मैं
2 बार जख्मी हो चुका हूँ काइंड ऑफ, कैसे कैसे तो अब जब भी आपको कोई किस you टाइप know, की ऐसे चोटें लगी थी इसमें जो इन्होंने स्टैब चलो किया था? चलो या गया रेड बोल रहा तो रेड डे 2 को इन्होंने मुझे स्टैब किया था लीजन गराज के पास, ओके जिसमें इन्होंने इनके हाथ में जो बोन डैगर थे जिससे इसने मुझे किडनैप भी किया था डे 1 को, वही चीज़ उनके हाथ में थी। तो पहले तो इन्होंने घुमाया, मैंने डिफेंड करने की कोशिश करी तो हाथ वाथ बीच में डाल दिया मैंने, तो तब मैं अनकॉन्शियस नहीं हुआ था। डिवाइड हो गया बट मैंने सेकेंड बार जब इन्होंने किया तब वो डायरेक्टली मुझे टच कर गया था मेरे बॉडी पे एंड आई गॉट डाउन अनकॉन्शियस। ऑलराइट एंड देन यू वेंट पिल बॉक्स मेरे एंड को डॉक्टर यार टैंगो ने ट्रीटमेंट जैसे आपको बता ट्रीट किया जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। क्यों मैं जैसे लड़ाई कर हाँ रहा जी हाँ जी, मुझे मेरे दोस्त जो जितने भी वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मुझे पिल बॉक्स लेके गए और वहाँ पे भी मेरे को ट्रीटमेंट दी गई, मैं थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया और फिर मैं सो गया था वहीं पे। ऑलराइट थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरजी। The Thank you. defense can proceed with the cross वे है examination. बैठे Yeah. ना देखना You go लॉयर ahead, का my lord. May I begin मैं with हूँ the कैनन। cross? Yep, go ahead. Right, Mr. केस Dexter, में my first question to you is, मजा आ रहा है, how well do you मजा know आ रहा है Mr. कि Body Chadda? How well do I know him? हाँ Yeah. I met him, I guess, अगर कुछ आप दिन खेलना एक पहले. बार में खेल रहे हो ना He was pretty चार दिन good भाई के to रहो तीन me तीन पहले कर की बात. before the जब boxing आएगा match. Let's say maybe 10, 12 days पहले. 12 days before you met him. Yep. अगर रेड में What all things do खेलना you know about Mr. Chadda? Nothing as much. Nothing as much. उनके एक डैड है जो शायद पुलिस ऑफिसर में है जिनका नाम रतन लाल चड्ढा है. That's a fact. Yeah. Now इतने going to मुझे the पता next question. Right, how were you able to confirm? Because the statement that you gave, ठीक है, एक बारी I will state it out, ठीक है, I will cite you, तो मेरे को बताना, ठीक है, if I'm saying anything wrong, ठीक है. On the 5th, Okay. you got into a boxing match with Mr. Kulcha, Yeah. ठीक है. Now on that point, you were saying that Mr. Chadda was present there, and Mhm. he was like somewhat unconscious. Am I right? Mhm. Yeah, yeah. objection your honor it's Like, leading the witness. how is this Sustained. leading? I'm हाँ just It is leading. You're putting words in यप his mouth. सही बोला। got me with that 1 minute. Okay, the next question is going to be on 6th. How were you able to confirm that the person in the Kara was Mr. Body Chadda? क्योंकि वो भाग के मेरे पास आए बोन डैगर लेके. उन्होंने मेरी आंख पे पट्टी बांध के मुझे उठा के गाड़ी में नहीं रखा था. आई वाज स्पीकिंग टू मिस्टर कुलशा एंड वो गाड़ी घुमा के आए, गाड़ी I पार्क think करी you're रोड पे taking it एंड wrong because no, see, hear my question again. How were you able to confirm that it is Mr. Body Chadda? बोल रहे हैं Anything specific that only Mr. Chadda has? जैसे वो बात करते हैं, जो उनका पहनावा है, जिस तरीके से उनकी बोलचाल है, और जो हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी वो हमारे उनके बीच में ही हुई थी. जो वो कह रहे थे कि तूने बॉक्सिंग में ऐसा किया वैसा किया. आई मीन इनके अलावा मैं किसी और इंसान से ऐसा मिला नहीं जिनसे मेरी बॉक्सिंग मैच हुई है. और इवन मैंने उनको ये भी बोला था कि आई एम नॉट अ बॉक्सर, तो आप मुझे क्यों रिंग में बुला रहे हैं. तो ये सारा इंसिडेंट इन्हीं के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ. एंड दैट वाज द इनके साथ ओनली हुआ, एंड कुलचा फर्स्ट के साथ हुआ है. इंसिडेंट आई एम सेइंग, नॉट द बॉक्सिंग मैच. इंसिडेंट आई एम सेइंग. All right, this incident, the one you're saying kidnapping and all that. ट्राइपॉड कोई नहीं माइक में पड़ा है नीचे भर के कट्टा वट्टा कहीं भी लो ना देखे देख इधर अरे रुक जा यार अभी हाँ तो कर ली बड़ा चुका होगा And events that unfolded in the past that only Mr. Body Chadda and Kulcha Singh were aware of. My lord, This was not a guys. One counsel. second. To what I heard so far is somewhat of a kidnapping scenario. Exactly, sir. Now, That's do we have the defendants to put up a charge against Body Chadda of kidnapping, or it is just attempt to murder?
So we have implement placed the charges of kidnapping, attempted murder, and also premeditated plan to murder. Kidnapping. Okay. आवाज And करिए what are the evidences for kidnapping? आवाज I mean, I know Sir, you guys are cross questioning, but there are witness accounts of government employees as well as friends of Dexter Morgan and other people who were talking to him while the kidnapping occurred. so friends of Dexter Morgan, they can't be the witnesses for this. Alright, Your Honor, The but we still have reputed government employees as well as third party witnesses who have no relation whatsoever and their biases are not represented in their statements. we'll go there, but Kenzie, any next arguments you have? So my main argument is that, like I just made it actually. There are people who could look similar. Was being chubby and I being that, do and not buy मैंने एक that. picture भी submit Let me करी है tell sir. you, I see that picture and I do not buy it because Alright, sir. what Mr. Morgan is referring here is personality traits and not physical appearances. He has not once mentioned his physical appearances except for the way he dresses, right? And even in the picture that you have sent, should you talk about the dressing sense, these are two complete different attires that I see in the picture, right? Absolutely, sir. And right, and we'll not go into the appearances part because clothing is freely available across Los तो Angeles. जॉइन प्रोसेस लो Yes, sir. Any other argument apart from I have a being rebuttal lookalike? witness to confirm that Mr. Chadha was not even present in the street. Do you have any more questions for Mr. Morgan? For Mr. Dexter Morgan now. Please be mindful because you won't be able to call him back again today. Oh, all right. Then to just confirm few more statements from Mr. Morgan. Mr. Morgan, do you mind running us through the whole situation again? After you were stripped down, that is. I'm good. You can sit. So basically, you're asking for day second, right? Yeah. Yeah. So day second, we were chilling at Legion Garage. I saw Body Chitta hanging out with his friends. मैं उनके पास गया उनसे बात करने के लिए. Suddenly he started running towards the road which leads to Wellbox and Integrity Model. हम लोग भी उसके पीछे गए बात करने के लिए. So it was like fun and all activity. It was like, for me it was not a ruckus या ऐसा कुछ कि आपको आपकी जान की कोई डर हो कि कुछ होने वाला है. एंड आपको पता होगा लीजन गराज से अगर आप जब जंप करते हैं रोड की तरफ तो एक देयर अ फेंसिंग, तो वो फेंसिंग जंप करके रोड पे कूदे. आई वाज ट्राइंग टू डू द सेम. मैं तब तक फेंसिंग कूद रहा था. जितने में मैं नीचे कूदता उतने में उनके हाथ में डैगर था एंड देन ही स्टैब्ड मी बिकॉज आई वाज इन द मिडल ऑफ द एक्शन जो हवे में और रोड पे जंप होने का था. तो मैं कुछ कर नहीं पाया. स्टिल आई ट्राइड टू डिफेंड माई सेल्फ. मैंने एक हाथ आगे किया, ट्राइड टू ब्लॉक द अटैक. वो थोड़ा बहुत हुआ. सेकंड आई डिडंट ब्लॉक दैट बिकॉज वो हो नहीं पाया मेरे से एंड देन आई गॉट स्टैब्ड. This is new information. I thought the second day you said was Mr. Kulsa called you there and then you were taken, you were kidnapped. And Sir, I guess asked you're about the not part. listening carefully. I guess I said day one. Milord, I was am at I Legion listening? Bank. Okay. Actually, let me just ask this question to Milord. Confirm that what is on the record. Milord. So, And why did I hear why it am I wrong? being questioned again? No, I just wanted to confirm something from the record, sir. That's why. What is it that you want to confirm? What I want to confirm is that when Mr. Morgan was giving a statement to the prosecutor, he said on 5th they had a boxing match. On 6th he was kidnapped, which is the day 2. And that is exactly what I wanted. And now there is new information that on day 2 he was stabbed. Well, So there's a confusion. To what I see in the written document and to what he said before, was on day 1 he got a call from Mr. Kulcha, whoever that guy is, an invitation to meet him at Del Perro. Right, This is Milord. what I documented on day 1. Right, Milord. Then they had this match wherein the guy did put him down. Right, Milord. This guy went to hospital and there were also some talks about how Dexter was being polite and asking about his well-being. Now, ये incident था day 1 का. Now, what he just Correct, sir. mentioned, he mentioned about day 2 that he was chilling at Legion Square with his friends.
Kara Khara pulled over, जिसमें apparently his statement, not mine. Mr. Chadda, along with his friends, was sitting. They came out. Something happened, and then they stabbed him. This is what I get so far. Exactly, my lord. That is the exact statement given to the prosecution. Now I asked May I Mr. speak Morgan something? for. I'm having a word with the my lord, Sure, right? sure, sure. Just Sure, sure. confirming that, Mr. Morgan. Right. So the thing is, my lord, right now I just even pointed that what day I was referring to, right? Because he was stripped down on the day that he was kidnapped, which is supposed to be day 2. And even according to the record with the statement given to the prosecution by Mr. Morgan himself, states that on day 2 he went through a kidnapping. Whereas now he's stating is on day 2, Mr. Jadda went ahead, jumped a fence, and then stabbed him. Lord, you are. Sir, actually, he has been saying it all along that it was day 2 when he got stabbed from the starting to I the think the opposing prosecution. counsel doesn't understand. I think so. It's my turn to. If you have No, any objection, please make it. I'm not. I'm just passing on a statement. I haven't said anything. I am not objecting you. Sir, I am on the record. My lord, can you please? I think my opposing counsel is not clear with the roads law. So, Kalki, if you have an objection, object to it with reason and then talk. No, sir, I don't have any objection. And to what I hear so far, Dexter was stabbed on day 2, not day 1. As far as my memory lane goes, he was stabbed on day 2, not on day 1. He was beaten on day 1, wherein he was hurt on his neck. Both Kulcha and Dexter went to pillbox, wherein Dexter also asked him about his well-being. yes, Now, sir. these were the events which unfolded on day 1. Yes, Day sir. 2, Morgan either got kidnapped or stopped. There is a confusion there, which I need some clarity. Exactly my point, my lord. Because to the prosecution, it was a different statement. To me, it's a different statement altogether. All right, let's And the hear last him time out. I checked, it's the lies who changed the statements. Yes, Mr. Morgan, please. Anji sir. Before you proceed, Mr. Morgan, as I'm cross-examining you, I would just like to tell you that perjury is a very severe offense. Yes, go ahead. I totally understand. Thank you so much. The thing is, day 1 and day 2 आप confuse हो रहे हैं. Let me make it very clear. 5th of November was a boxing match. There were there was nothing, no grudges, nothing. I mean, कोई मारामारी नहीं हुआ, kidnapping नहीं हुआ. So that is why I'm not saying it as a day 1. Okay? Sorry. It all happened on 5th, you're saying. No, let me complete, please. Okay. Okay. So 5th November is not a day 1. 6th November is day 1 where I got kidnapped. That is why I'm saying 6th November is day 1 because incident started happening on 6th November. That is why day 1. Sorry to cut you off, Mr. Morgan. I just want to state on 5th nothing happened. You're saying that is why that is not day 1. Nothing happened. I mean, उन्होंने मेरे को उठाया नहीं, मारा नहीं, कुछ नहीं. There was just only boxing match. हम लोग बातचीत किए, hospital गए. That's it. Morgan, for the sake of sanity, let's just put the boxing day as day 1. Will All that right, be cool. okay with you? I'm fine. Yeah, I'm fine. Okay. Okay. Thank Let's you, Your say- Honor. This was just being used as the defense's mechanism to, mislead the witness. All right. Nobody's misleading, but Can I say something now? I mean, may I speak? sure, sir. Go ahead and give your statement. Yeah. So as my lord said, let's say first 5th of November is day 1. Day 2, 6th of November, I got kidnapped. I got beaten up. They made me dance, lap dance and all. They recorded everything. They left me, or they only kapde vapde chhod ke. That is day 2nd, 6th of November. Let's come to day 3, 7th of November, जहाँ पे मेरे को स्टैप किया गया. इतनी देर से मैं day 1, day 2 कह रहा था. Let's unfold the events that happened on day 7. Cool. Day 7, I got stabbed on Legion Garage, on the road where it leads to. Let me ask you again. You said day 7 or 2nd?
No, 7th November, day 3rd. Don't say day 7, Kenzie. You're confusing the judge as well. Confusing the entire Apologies, court. my lord. I wanted to say Refer date, to the date. Day 1 as boxing, day 2 as kidnapping event, and then day follow 3 on. as the stabbing, sir. Stabbing event, yeah. All right. Day 3 is stabbing. Day 2 was kidnapping. Yes, sir. Is that correct? Okay. Now we're on day 3. Okay, day 3. जज भी कंफ्यूज हो गया सर Tell me the events that happened on day 3. शांत रहो Okay, day 3 is a stabbing event जहाँ पे I saw Body Chitta on Legion Garage with his friends, जहाँ पे वो सबके साथ बात कर रहा था. I went there, उनसे मैंने बातचीत करनी स्टार्ट करी. He started running towards a road. मैं उनके पीछे भागा. मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त थे. They saw me running. They came behind me. And it was like just normal, वो भाग रहा है, चिल कर रहा है. मेरे को लगा कि वो किसी के पास जा रहा है, तो मैं भी उनसे बात करते करते हाय हेलो करते करते उनके पास जा रहा था. He jumped over the fence. वो रोड पे गए. And meanwhile I was doing the same. जब तक मैं जंप करता वो ऑलरेडी स्टैंड हो चुके थे रोड पे. And in middle of the action, जहाँ पे मैं ज़मीन पे आने वाला हूँ, उन्होंने मुझे ट्राई किया स्टैप करने का. I somehow खड़ा होके मैंने कोशिश किया ब्लॉक करने का. I blocked one attack. And second attack, it got, I got hit by that. And मुझे वो like चाकू लग गया उनका जो बोन डैगर है वो लग गया मुझे. Dexter, when was the report filed by you? Which report, sir? Objection. The witness might not have any understanding of when the police does its actions. It is an irrelevant question to be asked to the witness. It has complete relevance. Actually, the question is when did he file it? Right. Yes, he was asking when did he complain to the cops. Okay, so day 1st, 5th of November. Oh, sorry, my bad. Day 1st is 5th, right? Day 2nd, when I got kidnapped, 6th of November. जब मैं किडनैप हुआ, मेरे पास जो मेरे दोस्त लोग थे, टोनी कार्टल एंड बाकी सारे लोग जो थे वो When the police does its actions, it is an irrelevant. सर जो कंप्लेंट लिख रहे थे मेरे को उनका नाम नहीं पता. मे बी ऑफिसर चिल्ड्रन बता पाएंगे. You're saying night time? Yeah. Okay. And on 6th, you were sure that it was Mr. Body Chatta? जो मुझे किडनैप किया. Did you and Mr. Body Chatta have anything? Never. Mr. Kulcha. Who was the other person, by the way? मास्क पहन रखा था. Then there was guy. Yeah, उन्होंने मास्क पहन रखा था. How many total people were? More than 3 to 4. 3 or 4? 4 people. 4 people. All right. So it was 4 of the kidnappers. They came in and kidnapped you. Right. After that, they took you to a place which looked where the scenery looks like an electric plant on the shore. Power plant, yeah. Yeah, exactly. Power plant on the shore. And uske baad mein, the next day, when you were at the Legion Garage, he saw you. He started running. You went behind him. Then he turned back and he tried to stab you. You basically were able to defend yourself on the first one, but on the second one you got stabbed. That's what you were saying. Yeah. Exactly. So when you were running behind Mr. Chadda, okay, exactly what words did you guys exchange at that time? On day 3. Hi, hello. Good question. कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, and all, nothing else. जो normal friends से बातचीत होती है. You were saying you guys were friends. You guys were having a friends talk. वो तो भाग रहा था ना. मैं तो उसको आवाज दे रहा था. Oh,
All right. That's it for the cross-examination from my side, Milad. But I would like to go ahead and point out regarding the boarding passes, the prosecution has still not been able to go ahead and delegitimize their legitimacy. And to confirm, there's a rebuttal witness that on 6th, Mr. Chadda, my client, did take the flight. So, by your permission, I would like to अबे call them in. ऑफिसर को बोलो ना खोलने के लिए. Sir? Could you repeat your question, Kenzie? Yeah, I'm just saying as I would like to call in a rebuttal witness to confirm that Mr. Chadda was not even present in the street खुल गया when Mr. What do you say, Morgan says that he was. ऑफिसर गेट खोल दो. Yeah, we can go there, but Bennett, do you have any further questions to be done?